My dear colleagues, members from IIC, Professor Iqbal Sahab, Professor Farah Sahab, Dr. Bilal Sahab, Dr. Maniji, Professor Shamsul Saman, Dr. Kesa Sahab, Dr. Ajaz Sahab, Dr. Javed Sahab, my dear students. Today really I am happy to be on this occasion. Sorry, heavy khulta hai on this occasion. On this mentoring session under self-improvement activity that is being carried under semester 2 of Institution Innovation Council. Let me briefly tell you about this Institution Innovation Council. This council was set up in this college just to cater the demands of the students who have little bit of skills but do not have the necessary directions or necessary funding support. For example, आप में से कोई student कल को कैलीग्राफी या किसी छोटे मोटे कुछ उसका अपना प्रोजेक्ट है, स्मॉल प्रोजेक्ट, लेकिन उसको पता नहीं है इसको स्केल अप कैसे करना है, या इसको मुझे अगर फंडिंग की जरूरत है तो मैं वो फंडिंग कहां से लूं। तो उन्हीं चीजों को केटर करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल को बनाने को लिए हमें कहा। इसमें हमने कुछ प्रोग्राम्स करे, पहले गड़करी से ऑनलाइन के प्रोग्राम, तब पता पे ऐसे व्हाई ऑफलाइन मोड्स में दी इसमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम करें। व्हाई? बिकॉज़ वी वांटेड टू इंटरेक्ट विद यू। एसेंशियली इट्स फॉर यू पीपल दैट वी आर डूइंग दीस प्रोग्राम्स। वी वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर किसी के पास छोटा-मोटा भी कोई प्रोजेक्ट है, लिटिल बिट, इवन आपको लगे कभी कि ये उतना बड़ा नहीं हो सकता है, मे बी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग, किसी को मोबाइल फोन में प्रोग्रामिंग अच्छी आती है, so in that direction also any programming, any skill of any sort, starting from tailoring up to industry, up to software, anything in which you think कि मैशर लापरवाही तगा यश में यह है मे बी यहाँ एक पता ब्रोड्स बेसिक किए। For example, आप लीजिए small example I will take about of this is my trip on. He was someday sitting around or because what he did was he thought let me make a software in which all the flight details and all the hotel details people can search from one place. एक ही जगह पे वो सर्च करें। तो आप इसमें ट्रिप में जाते हो तो वहां पे सर्च डाउन करते हो तो वो गूगल इंजन आपके लिए सर्च कर देता है एंड देन यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट। एंड आप अभी शायद इस चीज को उतना शायद लाइट मतलब उस तरीके से स्केल अप अपने माइंड में कर दीजिए इस चीज को कि बिकॉज इंडिया इज हैविंग अ ह्यूज पॉपुलेशन, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ थिंग्स कैन बी इजीली स्केल्ड अप क्योंकि नंबर्स आपके पास इजीली जनरेट हो सकते हैं। यू आर डीलिंग विद मोर देन 100 करोड़ पॉपुलेशन। सो अगर आपके पास छोटा सा कोई प्रोजेक्ट है तो आपको काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। I was previously talking with one of my students over here, ऑनलाइन मीटिंग थी हमारी, तो उन्होंने कहा मुझे कि मुझे पता भी नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट जब मैंने फेसबुक पे डाला तो वहां से मुझे ऑर्डर आने लगे। It's very strange, but it's true. किसी को अच्छा लगा, he will order it. And one personal example from my family, she used to knit those small dresses for kids. अपने बच्चों के लिए। One day I asked her, let me take the photographs of these 5. So I took the 5 snapshots, I put them on the Facebook, and I think within 1 week she got more than 50 orders. So I mean, one that simple frock, I should say frock or dress, cost more than 300. She had put a price tag of 350 rupees. और बनाने में उनको खर्चा लगा था not more than 50 rupees. So 300 rupees while sitting at home multiplied by 50. So good enough. And then she does not have enough time. अब वो बोल रही है कि I don't have time to go into that direction. Why I'm asking you guys this thing? Because at this point in time, even if you have small amount of skill, the present scenario is such you can scale that skill. अब ये नहीं है कि I'm not telling you that you should leave away this study. It's very, very important. Why? Because look at the Facebook owner. He was doing his, I think, PhD maybe in Stanford, I think. Then while doing that, he came up with this idea, I should learn this, and then huge amount of revenue he generated out of this. Essentially, you should go with this formal education as well. But at the same time, maybe some of you having a little bit of skill can come up with a new idea. So to cater those students.
economics. तो हमारा टॉपिक जो है it is entrepreneurship and startups in India. ठीक है? I will discuss some of this when this entrepreneurship and startups start by the Prime Minister Shri Narendra Modi, and after that we will discuss some of the success stories who are able to establish their estates, you can say business houses, and their worth is about in billions. Okay, this August 15, Honorable Prime Minister जो है उन्होंने अनाउंस किया है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, फ्लैगशिप इनिशिएटिव, जिसमें उन्होंने क्या किया है, उन्हें जो है मैंडेट दिया है टू प्रमोट एंड एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आवर कंट्री. यानी एंटरप्रेन्योर हम किसको कहते हैं? इन सिंपल टर्म्स एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो एक रिस्क लेने के लिए या जिसमें कोई एबिलिटी हो कि वो कोई अपना वेंचर स्टार्टअप करे so that he can earn profit and provide employment to the people. तो उसके लिए जो है इस एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के लिए जो है नरेंद्र मोदी ने उसने क्या किया है, श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा कि देयर आर एक्चुअली दिस इनिशिएटिव इट इज बेस्ड ऑन 3 pillars. One is the simplification and handholding. Second one is providing support and incentives. And third one is industry academia partnership. सबसे पहले जो सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग है, तो यहाँ पे बहुत सारी कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए हैं. किस तरह से ये जो है ये स्टार्टअप्स का जो है स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे उनको मेंटरशिप मिलता है, यहाँ पे उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं. उसके बाद जो है फंडिंग जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इसमें जो है फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है उनको कि उसके लिए कुछ मेजर्स बनाए गए हैं, जो भी जिसमें भी जैसे कि हमारे यूसी साहब ने कहा कि छोटी सी भी कोई स्किल्स अगर आपको हो तो उन स्किल्स को ग्रो अप करने के लिए उन स्किल्स या जो भी कोई आइडिया हो, जो भी आप बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बनाने का आइडिया हो, उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए, उसको कमर्शियली जो है वायबल उस बिजनेस को बनाने के लिए हमें फंडिंग की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. तो वो जो है वो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है. एंड थर्ड वन दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द पार्टनरशिप बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री. यानी फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉलेज है, तो यहाँ पे हम जो एजुकेशन हासिल करते हैं इट इज फॉर्मल एजुकेशन, है ना. तो इस फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ गवर्नमेंट के पॉलिसीज ऐसे हैं कि ये स्टूडेंट्स को कुछ स्किल्स देना चाहते हैं so that after completing graduation they will be marketed, उनकी मार्केटिंग बढ़ जाएगी. और सेकंड है कि वो जॉब सीकर्स नहीं बन जाएंगे बल्कि वो क्या बन जाएंगे, जॉब क्रिएटर्स. तो इसमें क्या किया गया है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ पॉलिसीज जो है उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है सो दैट कि जैसे कि लाइसेंस राज था पहले प्रेवेल हुआ था कि जिसको कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी होगी या कोई वेंचर एस्टैब्लिश करना होगा तो उसको एक लाइसेंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से उसके लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उसको खत्म किया गया. इसी तरह से इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए लैंड के लिए परमिशन चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे होते हैं ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर्स या इंडस्ट्रियल एस्टेट सेंटर, जैसे बहुत सारे यहाँ पे बड़गांव में भी होंगे, रंगरेट में एक सेंटर है, इसी तरह से लासीपुरा में है, सनत नगर में हो रही है, एचएफडी में हो रही है. तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे इनको एक तो लैंड दिया जाता है, दूसरा उनको एक शेड दिया जाता है जहाँ पे वो अपना ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करें. इसका मकसद ये था कि ये इकोनॉमी या इंडिया को क्या ट्रांसफॉर्म करे सो दैट वी कैन बिकम ए कंट्री ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स. और इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाएगी. क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे आ जाती है, वो आ जाती है जब भी हम क्या करेंगे, कोई स्टार्टअप होगा या इंडस्ट्री होगी. जब भी हम देखते हैं कि ट्रांजिशन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज का ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन किस तरह हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम कि सबसे पहले होता है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन. जब एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाता है तो दैट एग्रीकल्चर इज reach to a stage of जिसको कहते हैं commercialization of agriculture. After that there starts industry, और वो इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है जो पर्टिकुलरली रूरल एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी. आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ था. तो उससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जब
उस स्टेज पे पहुंचता है, उसके बाद इंडस्ट्री स्टार्ट हो गया और उसके बाद ट्रांजिशन होता है टू द सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो इसी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है कंट्रीज की। तो दैट इंडस्ट्री जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और अगर डिफरेंट कंट्रीज को हम स्टडी करें तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है आफ्टर सर्विस सेक्टर। सेकंड नंबर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट्स एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये स्टार्टअप्स जो है ये सिर्फ आप फोकस ही नहीं है सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये सिर्फ सर्विस सेक्टर में फोकस नहीं है या इंडस्ट्री सेक्टर, ये हर एक सेक्टर में आप कर सकते हो। आगे जाके हम पढ़ेंगे किस तरह से ये। Now entrepreneurship. Entrepreneurship is simply the capacity and willingness to develop, organize, manage a business venture along with its all risks in order to make a profit. यानी एंटरप्रेन्योर हम किसको कहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसमें एक कैपेसिटी होती है, विलिंगनेस टू ऑर्गेनाइज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की है, लैंड, लेबर, नेचर रिसोर्सेज एंड कैपिटल, तो ये सब इनको ऑर्गेनाइज करके वो क्या करता है, वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ स्टार्टअप्स, a startup is an organization dedicated to create something new under conditions of extreme uncertainty। यानी यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है पहली बार, जैसे फेसबुक की बात हम करेंगे तो जब फेसबुक लॉन्च नहीं हुआ था या ऐसी कोई ऐप नहीं थी तो हमें पता ही नहीं था कि फेसबुक जब मार्क ज़ुकरबर्ग बनाएगा क्या वो उसकी मार्केटेबल होगी या नहीं, मार्केटेबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो दैट इज एक्चुअली अनसर्टेनिटी पार्ट, है ना। तो ये रिस्क लेना ही है। We have a theory of risks, that uncertainty theory of risks, and वो theory हमें ये बता देती है कि जो मतलब जितना रिस्क लेता है ना उतनी उसकी ज्यादा प्रॉफिट बनती है। तो दैट मींस रिस्क जो है, अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है, हमें सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो रिस्क जो है वो हमें लेनी ही पड़ेगी। A startup usually involves innovation, offering a new concept or something that is not widely available। ये स्टार्टअप क्या है? कोई इनोवेशन। अभी इनोवेशन जो है, सबसे पहले आपको इनोवेशन पता होनी चाहिए कि इनोवेशन क्या है। इनोवेशन इज समथिंग यू कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ सम न्यू प्रोडक्ट। पहले वो प्रोडक्ट नहीं था, अब मार्केट में आ गया, दैट्स एन इनोवेशन। और इंट्रोडक्शन ऑफ सम न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। पहले कोई, जैसे कि अगर हम क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग लेंगे तो सबसे पहले हैंडलूम से क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। उसके बाद पावर लूम्स आ गए, तो दैट मींस पावर लूम इज ऑलटुगेदर न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि हैंडलूम्स जो है वो सिर्फ वहां पे हम लेबर्स यूज करते हैं। पावर लूम्स में लेबर को सब्स्टिट्यूट किया है विद कैपिटल। कैपिटल मींस मशीनरी, नॉट ओनली मनी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम ऑटोमेटिक लूम्स देखेंगे तो ऑटोमेटिक लूम्स में बिल्कुल जो है वहां पे लेबर की मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो दैट मींस देयर इज ऑलटुगेदर न्यू टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज आल्सो इनोवेशन। जैसे कि सबसे पहले क्या होता था, जब आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता था, आप यहां से मार्केट जाते थे, ठीक है। तो ये एक मेथड था कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते थे। लेकिन अब क्या है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, तो उन्होंने क्या किया है, एक नई मेथड डेवलप की है कि ये प्रोडक्ट जो है लोगों के डोर स्टेप पे पहुंचे। तो दैट इज आल्सो एन इनोवेशन। एंड इट इज आल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडस्ट्री, या कोई नई इंडस्ट्री हमने एस्टैब्लिश की है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, पहले दुनिया में जो है वो कार्स रन होते थे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं थे, लेकिन निको जैसे क्या इसका नाम नहीं वो इलेक्ट्रिक कार्स नहीं है ना, टेस्ला की कंपनी, हां एलन मस्क। तो एलन मस्क ने क्या किया है, उसने इंट्रोडक्शन की है एक नई व्हीकल की, दैट व्हिच इज based on this, it is an EV vehicle, electronic vehicle, so that means it is also an innovation, ठीक है। इसी तरह से introduction of a new market, for example हमें कोई ऐसा मार्केट था जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, या हम प्रोडक्ट बना रहे थे लेकिन उस मार्केट तक हम नहीं पहुंचते थे। अब हमने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट उस मार्केट तक पहुंचाए, उसको भी हम इनोवेशन कहते हैं। तो इस तरह की कोई भी इनोवेशन है, दैट इज स्टार्टअप। Prime Minister Shri Narendra Modi, sir, they said that IIC startups
technology and innovation as an exciting and effective instruments for India's transformation. यानी startups, technology and innovation, they are exciting instruments जो इंडिया को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म. और ट्रांसफॉर्म इन द सेंस ये एक डेवलप्ड नेशन बनेगा. और इसके लिए जो है उन्होंने जो है 2047 जिसको हम कहते हैं कि दिस इज द अमृतकाल, आजादी का अमृतकाल. और इस टाइम पीरियड में ये जो है एक ख्वाब देखा गया है, इसके लिए कोशिश भी की गई है कि we can transform India through innovation, through startups. Now this, what is startup? Registration, registered or incorporated not prior to period of 7 years. यानी कोई भी कॉर्पोरेशन जो रजिस्टर्ड हो या इनकॉर्पोरेट हो मगर 7 साल उसको नहीं हुए, 7 साल से पहले नहीं हुए. और कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज और कंपनी जो लिमिटेड लेबर पार्टनरशिप पे बेस्ड है, एलएलपी लिमिटेड लेबर पार्टनरशिप पे बेस्ड है, वो अगर स्टार्ट हो जाए दैट इज आल्सो स्टार्टअप. या कोई भी कंपनी जिसकी टर्नओवर जो है वो एक्सीड ना हो जाए 25 करोड़, उसको भी हम स्टार्टअप कहते हैं. कोई भी एंटिटी जो है should not have framed by splitting up or reconstructing the business already existing. यानी कोई भी नई कंपनी जो पहले जो है बिजनेस में नहीं थी अब वो बिजनेस में आ गई, दैट इज आल्सो a startup. या कोई जो भी हम इनोवेशन करते हैं और इंप्रूवमेंट ऑन प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और सर्विसेज, दैट इज आल्सो a startup. या कोई ऐसा मॉडल हम देते हैं कि स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन. कोई ऐसा मॉडल जिससे प्रोबेबिलिटी है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा, इससे वेल्थ बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा, लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक मिंत्रा, है ना, ये चीजें. व्हाई स्टार्टअप्स इन इंडिया? सबसे पहले ये है टू बूस्ट अप एंड प्रमोट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप. यानी सबसे पहले इसका ये मकसद है कि हमें यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है. यंग बॉयज एंड गर्ल्स को जो है उनको एलियर करना है, उनको जो है उनको इंस्पायर करना है, so that they will come up with some innovative ideas and they will start up their ventures so that they will become job creators instead of job seekers. Core objective is to generate maximum employment. हमें पता है कि जितना भी अगर हम इंडिया और अमेरिका में कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया में जो है हर ये एक प्रीवियस स्टडी थी कि इंडिया में जो है हर साल जो इंजीनियर ग्रेजुएट्स निकलते हैं अबाउट 16 लाख ग्रेजुएट्स जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडिया में हर साल निकलते हैं. और अमेरिका में इसके बराबर जो है 2 लाख निकलते हैं. लेकिन फिर जब हम देखेंगे कि कितने लोग जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट जो प्रोडक्टिवली कहीं पे एम्प्लॉय हो जाते हैं, कहीं प्रोडक्टिवली कहीं पे जो है जॉब लग जाती है, वो बहुत कम है इंडिया में एज कंपेयर टू अमेरिका. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास में इसको हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. क्यों? क्योंकि हम ज्यादा डिपेंडेंट हैं किस चीज पे? गवर्नमेंट सेक्टर पे. या हम जो है हम डिपेंड हैं किसी इंडस्ट्री पे भी या प्राइवेट सेक्टर पे भी, बट हम अपना जॉब जो है हम अपना वेंचर स्टार्ट नहीं करना चाहते. तो जब हम लोगों को इंस्पायर करेंगे, यंग ग्रेजुएट्स को इंस्पायर करेंगे, सो दैट दे विल स्टार्ट देयर ओन वेंचर्स, वो बन जाएंगे जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर. आगे जाके हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जहां पे हम देखेंगे कि आप लोग इंस्पायर हो जाओगे किस तरह से. कुछ लोग जो है उनको पहले आइडिया नहीं था कि उनका बिजनेस जो है वो इतना ग्रो हो गया है, लेकिन बाद में आज अगर उनके बिजनेस को देखेंगे वो हम देखते हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उनका जो बिजनेस फैला हुआ है. Encourage people who have potential to innovate and start their own business. That's the third objective or you can say motto of this. To boost the banking and financial sector, हमारा banking और financial sector को boost करना. To be a job creator, then job seeker. There are some key points of the scheme of startups. Number 1 is self certification. यानी जो भी कोई स्टार्टअप करता है तो इसको यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन मिलता है.
ठीक है, और वो सेल्फ सर्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द 9 एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉ, ये गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है। टैक्स एजम्पशन यानी उसको पहले 3 इयर्स के लिए जितना भी उसका वेंचर होगा या जितना भी एनुअल टर्नओवर होगा उस पे उसको टैक्स एजम्पशन मिलती है, यानी उसको टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे उनको एक जो बूस्ट हो जाती है वो कि हमें ये वेंचर स्टार्ट करना है, हमें इस पे टैक्स जो है एजम्पशन दिए गए हैं, सो उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि वो अपने स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट करें। इसी तरह से यहाँ पे उनको क्या किया जाता है, इनको हेल्प किया जाता है, जो भी उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया है उसके पेटेंट उसको फाइल करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है वो उसके फाइल करना, ठीक है, और उसके लिए उनको जो है 80% रिबेट्स दिया जा रहा है, वो पेटेंट्स आपने फाइल करें। कोई भी सिंपल सा इनोवेटिव आइडिया, कोई भी स्किल आपका होगा और उस स्किल को बूस्ट आप करके अगर आप उसका पेटेंट फाइल करना चाहते हो, ठीक है, तो उससे जो है उसमें 80% रिबेट मिलता है उस पेटेंट को फाइल करने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, है ना, फेसबुक पे, तो वहां पे उनको छोटे-छोटे वो वेंचर्स लेके आते हैं, तो फिर उनको वो पूछते हैं वहां पे क्या आप लोगों ने इसके पेटेंट्स फाइल किए हैं, क्या आप लोगों ने इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फाइल किए। इससे ये होता है कि जो आपने वो आइडिया बनाया होता है या आपके ज़हन में वो आइडिया आता है, आप वो कोई और मतलब उसको चोरी ना करे। दैट इज व्हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट्स फाइल करना वहां पे इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स, तो हमारा टॉपिक जो है इट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया, ठीक है। आई विल डिस्कस सम ऑफ दिस व्हेन दिस एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप स्टार्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर Shri Narendra Modi, and after that we will discuss some of the success stories who were able to establish their estates, you can say business houses, and their worth is about in billions. Okay, this August 15, Honorable Prime Minister जो है उन्होंने अनाउंस किया है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, फ्लैगशिप इनिशिएटिव, जिसमें उन्होंने क्या किया है, उन्हें जो है मैंडेट दिया है to promote and encourage young entrepreneurs of our country. यानी entrepreneur हम किसको कहते हैं? In simple terms, entrepreneur वो बंदा होगा है जो एक रिस्क लेने के लिए या जिसमें कोई एबिलिटी हो कि वो कोई अपना वेंचर स्टार्टअप करे so that he can earn profit and provide employment to the people. तो उसके लिए जो है इस एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के लिए जो है नरेंद्र मोदी ने उसने क्या किया है, श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा कि देयर आर एक्चुअली दिस इनिशिएटिव इट इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स. वन इज द सिंपलीफिकेशन एंड हैंडहोल्ड, सेकंड वन इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनर. सबसे पहले जो सिंपलीफिकेशन एंड हैंडहोल्डिंग है, तो यहां पे बहुत सारी कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए हैं किस तरह से ये जो है ये स्टार्टअप्स का जो है स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे उनको मेंटरशिप मिलता है, यहाँ पे उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं. उसके बाद जो है फंडिंग जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इसमें जो है फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है उनको कि उसके लिए कुछ मेजर्स बनाए गए हैं, जो भी जिसमें भी जैसे कि हमारे यूसी साहब ने कहा कि छोटे से भी कोई स्किल्स अगर आपको हो तो उन स्किल्स को ग्रो अप करने के लिए उन स्किल्स या जो भी कोई आइडिया हो, जो भी आप बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बनाने का आइडिया हो, उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए, उसको कमर्शियली जो है वायबल उस बिजनेस को बनाने के लिए हमें फंडिंग की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. तो वो जो है वो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है. एंड थर्ड वन दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द पार्टनरशिप बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री. यानी फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉलेज है, तो यहाँ पे हम जो एजुकेशन हासिल करते हैं इज फॉर्मल एजुकेशन, है ना. तो इस फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ गवर्नमेंट के पॉलिसीज ऐसे हैं कि ये स्टूडेंट्स को कुछ स्किल्स देना चाहते हैं सो दैट आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन दे विल बी मार्केटेड, उनकी मार्केटिंग बढ़ जाएगी. और सेकंड थिंग कि वो जॉब सीकर्स नहीं बन जाएंगे, बल्कि वो क्या बन जाएंगे, जॉब क्रिएटर्स. तो इसमें क्या किया गया है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ पॉलिसीज जो है उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है सो दैट कि जैसे कि
राज था, पहले प्रवेल हुआ था कि जिसको कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी होगी या कोई वेंचर एस्टेब्लिश करना होगा तो उसको एक लाइसेंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से उसके लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उसको खत्म किया गया। इसी तरह से इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए लैंड के लिए परमिशन चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे होते हैं ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर्स या इंडस्ट्रियल एस्टेट सेंटर, जैसे बहुत सारे यहाँ पे बड़गांव में भी होंगे, रंगरेट में एक सेंटर है, इसी तरह से लासीपुरा में है, सनत नगर में हो रहे हैं, एचएफडी में हो रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे इनको एक तो लैंड दिया जाता है, दूसरा उनको एक शेड दिया जाता है जहाँ पे वो अपना ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। इसका मकसद ये था कि ये इकोनॉमी या इंडिया को क्या ट्रांसफॉर्म करे, सो दैट वी कैन बिकम ए कंट्री ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। और इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाएगी, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे आ जाती है, वो आ जाती है जब भी हम क्या करेंगे, कोई स्टार्टअप होगा या इंडस्ट्री होगी। जब भी हम देखते हैं कि ट्रांजिशन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज का ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन किस तरह हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले होता है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। जब एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाता है तो दैट एग्रीकल्चर इज reach to a stage of जिसको कहते हैं commercialization of agriculture. After that there starts industry, और वो इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है जो particularly rural and agro based industry होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ था, तो उससे हमें ये पता चलता है कि इट इज एक्चुअली कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जब उस स्टेज पे पहुंचता है उसके बाद इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई और उसके बाद ट्रांजिशन होता है टू द सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इसी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है कंट्रीज की। तो दैट इंडस्ट्री जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और अगर डिफरेंट कंट्रीज को हम स्टडी करें तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है आफ्टर सर्विस सेक्टर। सेकंड नंबर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये स्टार्टअप्स जो है ये सिर्फ आप फोकस ही नहीं है सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये सिर्फ सर्विस सेक्टर में फोकस नहीं है या इंडस्ट्री से, ये हर एक सेक्टर में आप कर सकते हो। आगे जाके हम पढ़ेंगे किस तरह से ये। Now entrepreneurship. Entrepreneurship is simply the capacity and willingness to develop, organize, manage a business venture along with its all risks in order to make a profit. यानी एंटरप्रेन्योर हम किसको कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप ये इसमें एक कैपेसिटी होती है, willingness to organize all the factors of production, जिनमें factors of production भी है land, labor, natural resources and capital। तो ये सब इनको ऑर्गेनाइज करके वो क्या करता है, वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ स्टार्टअप्स, a startup is an organization dedicated to create something new under conditions of extreme uncertainty। यानी यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है कि ये प्रोडक्ट जो है पहली बार, जैसे फेसबुक की बात हम करेंगे तो जब फेसबुक लॉन्च नहीं हुआ था या ऐसी कोई ऐप नहीं थी तो हमें पता ही नहीं था कि फेसबुक जब मार्क ज़करबर्ग बनाएगा क्या वो उसकी मार्केटेबल होगी या नहीं, मार्केटेबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो दैट इज एक्चुअली अनसर्टेनिटी पार्ट है ना। तो ये रिस्क लेना नहीं है। वी हैव अ थ्योरी ऑफ रिस्क दैट अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ रिस्क, एंड वो थ्योरी हमें ये बता देती है कि जो बंदा जितना रिस्क लेता है ना उतनी उसकी ज्यादा प्रॉफिट बनती है। तो दैट मींस रिस्क जो है, अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है, हमें सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो रिस्क जो है वो हमें लेनी पड़ेगी। A startup usually involves innovation, offering a new concept or something that is not widely available। यानी स्टार्टअप क्या है, कोई इनोवेशन। अभी इनोवेशन जो है सबसे पहले आपको इनोवेशन पता होनी चाहिए कि इनोवेशन क्या है। इनोवेशन इज समथिंग you can say introduction of some new product। पहले वो प्रोडक्ट नहीं था, अब मार्केट में आ गया, that's an innovation। और introduction of some new method of production। पहले कोई, जैसे कि अगर हम क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग लेंगे तो सबसे पहले हैंडलूम से क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, उसके बाद पावर लूम्स आ गए। तो दैट मींस पावर लूम इज ऑलटुगेदर न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि हैंडलूम्स जो है वो सिर्फ वहां पे हम लेबर्स यूज करते हैं। पावर लूम्स में लेबर को सब्स्टिट्यूट किया है विद कैपिटल। कैपिटल मींस मशीनरी, नॉट ओनली मनी। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम ऑटोमेटिक लूम्स देखेंगे तो ऑटोमेटिक लूम्स में बिल्कुल जो है वहां पे लेबर की मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दैट मींस देयर इज ऑलटुगेदर अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई न्यू मेथड ऑफ
प्रोडक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज आल्सो इनोवेशन। जैसे कि सबसे पहले क्या होता था, जब आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता था, आप यहां से मार्केट जाते थे, ठीक है, तो ये एक मेथड था कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते थे। लेकिन अब क्या है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, तो उन्होंने क्या किया है, एक नई मेथड डेवलप की है कि ये प्रोडक्ट जो है लोगों के डोर स्टेप पे पहुंचे, तो दैट इज आल्सो एन इनोवेशन। एंड इट इज आल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडस्ट्री, या कोई नई इंडस्ट्री हमने एस्टैब्लिश की है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, पहले दुनिया में जो है वो कार्स रन होते थे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं थे, लेकिन निकल जैसे क्या इसका नाम नहीं वो इलेक्ट्रिक कार्स नहीं है ना, टेस्ला कंपनी, हां एलन मस्क। तो एलन मस्क ने क्या किया है, उसने इंट्रोडक्शन की है एक नई व्हीकल की, दैट व्हिच इज बेस्ड ऑन this, it is an EV vehicle, electronic vehicle, so that it is also an innovation, ठीक है। इसी तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मार्केट, फॉर एग्जांपल हमें कोई ऐसा मार्केट था जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, या हम प्रोडक्ट बना रहे थे लेकिन उस मार्केट तक हम नहीं पहुंचते थे, अब हमने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट उस मार्केट तक पहुंचाए, उसको भी हम इनोवेशन कहते हैं। तो इस तरह की कोई भी इनोवेशन है, दैट इज स्टार्टअप। Prime Minister Shri Narendra Modi, sir, they said that I see startups, technology and innovation as an exciting and effective instruments for India's transformation. यानी startups, technology and innovation, they are exciting instruments जो इंडिया को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म इन द सेंस ये एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। और इसके लिए जो है उन्होंने जो है 2047, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज द अमृतकाल, आजादी का अमृतकाल, और इस टाइम पीरियड में ये जो है एक ख्वाब देखा गया है, इसके लिए कोशिश भी की गई है कि we can transform India through innovation, through startups. Now this, what is startup? Registration, registered or incorporated not prior to period of 7 years, यानी कोई भी कॉर्पोरेशन जो रजिस्टर्ड हो या इनकॉर्पोरेट हो मगर 7 साल उसको नहीं हुए, 7 साल से पहले नहीं हुए। और कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज और कंपनी जो लिमिटेड लेबर पार्टनरशिप पे बेस्ड है, एलएलपी लिमिटेड लेबर पार्टनरशिप पे बेस्ड है, वो अगर स्टार्ट हो जाए, दैट इज आल्सो स्टार्टअप। या कोई भी कंपनी जिसकी टर्नओवर जो है वो एक्सीड ना हो जाए 25 करोड़, उसको भी हम स्टार्टअप कहते हैं। कोई भी एंटिटी जो है should not have framed by splitting up or reconstructing the business already existing, यानी कोई भी नई कंपनी जो पहले जो है बिजनेस में नहीं थी, अब वो बिजनेस में आ गई, दैट इज आल्सो अ स्टार्टअप। या कोई जो भी हम इनोवेशन करते हैं और इंप्रूवमेंट ऑन प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और सर्विसेज, दैट इज आल्सो अ स्टार्टअप। या कोई ऐसा मॉडल हम देते हैं स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन, कोई ऐसा मॉडल जिससे प्रोबेबिलिटी है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा, इससे वेल्थ बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा, लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक मिंत्रा, है ना, ये चीजें। Why startups in India? सबसे पहले ये है to boost up and promote startups and entrepreneurship, यानी सबसे पहले इसका ये मकसद है कि हमें यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को जो है उनको एडियर करना है, उनको जो है उनको इंस्पायर करना है, so that they will come up with some innovative ideas and they will start up their ventures so that they will become job creators instead of job seekers. Core objective is to generate maximum employment. हमें पता है कि जितना भी अगर हम इंडिया और अमेरिका में कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया में जो है हर, ये एक प्रीवियस स्टेट थी कि इंडिया में जो है हर साल जो इंजीनियर ग्रेजुएट्स निकलते हैं, अबाउट 16 लाख ग्रेजुएट्स जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडिया में हर साल निकलते हैं।
और अमेरिका में इसके बारे में जो है 2 lakhs निकलते हैं। लेकिन फिर जब हम देखेंगे कि कितने लोग जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट जो प्रोडक्टिवली कहीं पे एम्प्लॉय हो जाते हैं, कहीं प्रोडक्टिवली कहीं पे जो है जॉब लग जाती है, वो बहुत कम है इंडिया में एज कम्पेयर टू अमेरिका। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास में इसको हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा डिपेंडेंट हैं किस चीज पे? गवर्नमेंट सेक्टर पे, या हम जो है हम डिपेंड हैं किसी इंडस्ट्री पे भी या प्राइवेट सेक्टर पे भी, बट हम अपना जॉब जो है हम अपना वेंचर स्टार्ट नहीं करना चाहते। तो जब हम लोगों को इंस्पायर करेंगे, यंग ग्रेजुएट्स को इंस्पायर करेंगे, सो दैट दे विल स्टार्ट देयर ओन वेंचर्स, वो बन जाएंगे जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। आगे जाके हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जहां पे हम देखेंगे कि आप लोग इंस्पायर हो जाओगे किस तरह से। कुछ लोग जो है उनको पहले आइडिया नहीं था कि उनका बिजनेस जो है वो इतना ग्रो हो गया है, लेकिन बाद में आज अगर उनके बिजनेस को देखेंगे वो हम देखते हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उनका जो बिजनेस फैला हुआ है। एनकरेज पीपल who have potential to innovate and start their own business. That's the third objective, or you can say motto of this, to boost the banking and financial sector. हमारा banking और financial sector को boost करना, to be a job creator than job seeker. There are some key points of the scheme of startups. Number 1 is self certification. यानी जो भी कोई स्टार्टअप करता है तो इसको यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है? और वो सेल्फ सर्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द 9 एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉ। ये गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है। टैक्स एग्जेम्पशन, यानी उसको पहले 3 इयर्स के लिए जितना भी उसका वेंचर होगा या जितना भी एनुअल टर्नओवर होगा उसमें उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, यानी उसको टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ता है। तो इससे क्या हो जाता है? इससे उनको एक जो बूस्ट हो जाती है वो कि हमें ये वेंचर स्टार्ट करना है, हमें इस पे टैक्स जो है एग्जेम्पशन दिए गए हैं, सो उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि वो अपने स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट करें। इसी तरह से यहाँ पे उनको क्या किया जाता है? इनको हेल्प किया जाता है, जो भी उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया है उसके पेटेंट उसको फाइल करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है वो उसके फाइल करना, ठीक है? और उसके लिए उनको जो है 80% रिबेट्स दिया जा रहा है, वो पेटेंट्स आपने फाइल करें। कोई भी सिंपल सा इनोवेटिव आइडिया, कोई भी स्किल आपका होगा और उस स्किल को बूस्ट आप करके अगर आप उसका पेटेंट फाइल करना चाहते हो, ठीक है, तो उससे जो है उसमें 80% रिबेट मिलता है उस पेटेंट को फाइल करने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, है ना, फेसबुक पे, तो वहां पर उनको छोटे-छोटे वो वेंचर्स लेके आते हैं, तो फिर उनको वो पूछते हैं वहां पे क्या आप लोगों ने इसके पेटेंट्स फाइल किए हैं, क्या आप लोगों ने इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फाइल किए। इससे ये होता है कि जो आपने वो आइडिया बनाया होता है, ये आपके ज़हन में वो आइडिया आता है, आप वो कोई और मतलब उसको चोरी ना करे। दैट इज व्हाई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट्स फाइल करना वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से यहां पे इनको ये भी सपोर्ट दिया जाता है कि जैसे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स, बहुत सारे पब्लिक जो है सेक्टर्स में, चाहे वो कॉलेज होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, जितने भी पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, वहां पे उनको गुड्स एंड सर्विस की जरूरत पड़ती है। और वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है अगर स्टार्टअप से वो लोग लेंगे तो उनको वहां पे क्या दिया करते हैं? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने पे उनको जो है एग्जेम्पशन दी जाती है। 15% लेस अगर उन्होंने 15% मोर अगर उन्होंने प्राइस दिया होगा, फिर भी जो है उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को उन्हीं से परचेज करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई ए फर्म है, ये प्राइवेट एंटरप्राइज रन कर रहा है, इसका कोई प्रोडक्ट ये चेयर जो है 100 रुपए में है। अब कोई स्टार्टअप है, वो यही चेयर बना रहा है, ठीक है, लेकिन वो इसको 150 रुपए इसका प्राइस दे रहा है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को किससे परचेज कर रहा है? जो 150 दे रहा है, बिकॉज वो स्टार्टअप है, ठीक है, वो उस बंदे से उसको नहीं लेना है जिसने 100 पे दिया है। इसलिए ये इंसेंटिव्स है कि 50 रुपीस एक्स्ट्रा, सो दैट ये एनकरेज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट से टेंडर्स वगैरह निकालते हैं, वहां पे भी उनको रिबेट दी जाती है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने में। एंड वी हैव 10,000 करोड़ स्टार्टअप पूल फंड यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है, सो दैट इससे जो है उनको पैसा मिल जाएगा। और
इससे क्या हो जाएगा, कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको एनकरेजमेंट मिल जाएगी और स्टार्टअप जो है वो प्रमोट हो जाएंगे। अब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो किस तरह बिल्ड अप हो जाता है। सबसे पहले किसी के पास कोई इनोवेटिव आइडिया होगा, ठीक है, उसको हेल्प करने के लिए देयर इज सम ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, ठीक है। इसी तरह से कुछ बड़े इंडस्ट्रीज हो जाते हैं होते हैं जो इनको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इन स्टार्टअप्स को। इसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेज जो यहाँ पे लोगों को अवेयर करते हैं, या जैसे कि अगर आप में से किसी बंदे को कुछ आइडिया होगा, कुछ इनोवेटिव आइडिया होगा अपने ज़हन में, वो कॉलेज में आके हमें वो आइडिया बताएंगे और हम उसको आगे जाके गाइडेंस करेंगे कि आप अपने इस आइडिया को किस तरह शेप देंगे, किस तरह से आप इसको प्रमोट करेंगे, किस तरह से आप इसको। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें ये कुछ फिगर्स है, जैसे कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट मॉड्यूल जो है, जो इनोवेशन पे स्टार्टअप्स पे इंडिया में है 34,715, ये वो मॉड्यूल्स हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट मॉड्यूल्स अबाउट इनोवेशन, अबाउट स्टार्टअप्स। टोटल जो है हमारे पास जो हब्स है इट इज 2,90,586 इनोवेशन जो है अभी तक स्टार्टअप्स इंडिया में है। जो जिनको रिकॉग्निशन मिली है दैट इज 15,301, और जिनको फंडिंग सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से वो है 129। अब हम देखेंगे कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा इनोवेशन है। 800 एंड ओवर, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है ना, तो ऐसे या तेलंगाना है या तमिलनाडु है, तो ऐसे कुछ स्टेट्स में यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं। अगर हम अपने जम्मू कश्मीर का देखेंगे तो हम वहां पे है जहां पे लेस देन अप टू अंडर 100, यानी 100 से कम यहाँ पे स्टार्टअप्स हुए। इसका मतलब है कि हम कितने पीछे हैं इन स्टार्टअप्स में, हमें ये प्रमोट करना है ये चीजें। दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट का ये जो है इनिशिएटिव के लोगों को, स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलरली वो जनरेशन जो हमारे यहाँ पे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी, उनको अवेयर करना है so that they will come up some innovative idea. Now after that state wise अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा परफॉर्मर, हाईएस्ट परफॉर्मर इसमें गुजरात है। सेकंड नंबर पे हमारे कर्नाटका, केरला, उड़ीसा और राजस्थान है। इसी तरह से जो लीडर्स है यहाँ पे दैट इज आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद एस्पायरिंग परफॉर्मर्स हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। उसके बाद इमर्जिंग, उसमें हमारा जेएंडके आ जाता है, जैसे हम इमर्जिंग है अब अभी जो है चल रहे हैं इसमें। तो ये है इस स्टेट में कितने लोग जो है स्टार्टअप अभी तक जो है एस्टेब्लिश हुए हैं। सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है स्टेट वाइज किस कहां पे कितने स्टार्टअप जो है वो अभी तक एस्टेब्लिश हो गए हैं। So in Kashmir, how many startups? Less than 100. Less than 100. जम्मू एंड कश्मीर जो है less than 100 अभी तक। हाईएस्ट है महाराष्ट्र। अब यहाँ पे हाईएस्ट महाराष्ट्र में, बट बेस्ट परफॉर्मेंस गुजरात। बेस्ट परफॉर्मर मींस के एस्टेब्लिश इतने हुए, लेकिन उनमें से सर्वाइव कितनों ने किया है, दैट द बेस्ट परफॉर्मर। सक्सेस रेट इसको हम कहते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ यूएस में है। यूएस के बाद जो है सेकंड नंबर पे यूके में, फिर थर्ड नंबर पे जो कनाडा, और फोर्थ नंबर थर्ड नंबर कनाडा नहीं, यहाँ पे फिर इंडिया और चाइना में एक जैसे हैं, वहां पे उससे कम है। तो ये पूरे वर्ल्ड में कहां पे कितने स्टार्टअप्स हैं, ये वो चीजें दिखा रहा है। अब अगर हम देखेंगे कि इसमें ब्रेकअप करके कौन सा स्टार्टअप कितना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ई कॉमर्स जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स 33%। ये सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। टेक्नोलॉजी बेस्ड में 33% कंट्रीब्यूशन है ई कॉमर्स का। फिर B2B जो होता है कॉमर्स वाले, आप इस चीज को जानते होंगे, B2B बिजनेस दैट इज द फ्रॉम दिस मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर और होलसेलर, ठीक है, तो उसमें 24% है। इसी तरह से कंज्यूमर इंटरनेट जो है 12%, मोबाइल एप्स
जो मोबाइल ऐप्स बन गए हैं उनकी मार्केटेबिलिटी हुई है तो वो जो है दैट कम्स टू 10%। उसके बाद जो है SaaS, दैट इज द सर्विस एज दिस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो वो 8% है, अदर जो है वो 13% है। अब अगर नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड देखेंगे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ सर्विस ही नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे इंजीनियरिंग में 17% जो है वो कंट्रीब्यूशन है इंजीनियरिंग का। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वहाँ पे 13% है। एग्री प्रोडक्ट दैट मींस यहाँ पे एग्रीकल्चर भी इन्वॉल्व है, ये सिर्फ इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में नहीं है, एग्रीकल्चर में भी है। एग्री प्रोडक्ट 11%, टेक्सटाइल्स में 8%, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग 8%, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक तो इसमें 6%। बहुत सारी चीजें जैसे कि अगर आपने देखा होगा शार्क टैंक में वो कश्मीर बेस्ड वो जिगनू का एक आया था ना एंटरप्रेन्योर, जिगनू जो चला रहा है कश्मीर में, देखा है किसी ने वो वाला शार्क टैंक? जिगनू इज सिंपली अ लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो कश्मीर बेस्ड एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है लोगों को। इसमें वो आपके घर के लिए जितने भी ग्रोसरी है वो बेचता है, इवन अगर जम्मू और दिल्ली से कुछ प्रोडक्ट वहां लाना होता है उसके लिए वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक बेस्ड, ठीक है। उनकी वो ऐप है, आप देख सकते हो प्ले स्टोर पर, उस पे डाउनलोड कर सकते हो जिगनो, उससे बहुत सारी चीजें आप ऑर्डर कर सकते हो। वो आपको सर्विस जैसे कि दुकानदार से वो माल उठाएगा और आपके घर पे लाएगा, तो वो जो है 6%। आउटसोर्सिंग एंड सपोर्ट वो 5% है, अदर जो है वो 32%। अब अगर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग वी आर हैविंग 8% ऑफ। नहीं ये पूरे इंडिया में, कश्मीर से। अब अगर हम देखेंगे कि इस तरह किस तरह से फंक्शन करता है, जैसे कि इंडिया जो है इट इज द थर्ड लार्जेस्ट जो है स्टार्टअप्स में वर्ल्ड में। अब इसमें लोग जो है वो 28 इयर्स के, यानी कि जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं काम कर रहे हैं, इनोवेशन या स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो उनकी एवरेज एज है 28 इयर्स, ठीक है। ओके, तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इज इंडिया एज पर द स्टार्टअप्स। अब जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है वो उनकी एवरेज एज है 28 इयर्स। कभी-कभी आप शार्क टैंक जो है वो देखा कीजिए, वहां पे वो भी एंटरप्रेन्योर्स आ जाते हैं जो लेस देन 18 इयर्स के एज होते हैं, 16 इयर्स, 17 इयर्स, 12 इयर्स के एज पे होते हैं। कभी-कभी आप देखा कीजिए, आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी। हालांकि उन्होंने वो आइडिया दिए होते हैं कि आपको ऐसे बहुत सारे आइडिया दिमाग में आते होंगे, लेकिन उनको प्रैक्टिकली शेप देना वो एक्चुअली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज आइडिया तो आते हैं, लेकिन आइडिया को जब प्रैक्टिकली शेप नहीं दोगे, कमर्शियली उसको ऐसा नहीं आप बनाओगे, तब तक वो आइडिया ही रहेगा। So I think IIC will help. हाँ, IIC will help in this, you can say in this way, so that जितने भी आपके पास जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको एक प्रैक्टिकल शेप में, उनको कमर्शियली वायबल बनाने के लिए जो है आपको इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो हेल्प करेगा। इसी तरह से इसमें टोटल अगर हम देखेंगे ना, अब हम कहते हैं कि यहाँ पे फीमेल्स कुछ नहीं कर सकते, तो 9% इनमें से वो लोग हैं जो क्या है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, 9% इनमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है। ओके, ये बहुत ज्यादा डिटेल है, तो इतना ज्यादा डिटेल अभी हम जो है क्योंकि बिकॉज़ ऑफ पास की टाइम ये तो स्टूडेंट्स हमारे जो सर आफ्टर प्रेजेंटेशन अगर हम ये डिस्कस करेंगे, दिस क्वेश्चन विल बी रेज्ड श्योर। ओके, अब इसमें कुछ चैलेंजेस है, स्टार्टअप्स में कुछ चैलेंजेस है, हर एक चीज में जो है वो चैलेंजेस हमें फेस करने होंगे। इसमें भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे रिसेंट स्टडी जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की है, उन्होंने कहा कि इंडिया में क्या है 90% जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स इंडिया में होते हैं उनमें 90% फेल होते हैं। और फेल क्यों होते हैं? 90% फेल होते हैं, ठीक है, इन फर्स्ट 5 इयर्स, यानी पहले 5 सालों में जो है 90% फेल होते हैं। उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है लैक ऑफ इनोवेशन, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इनोवेशन वो चीज है इसमें आपको कंटिन्यूअसली जाना है, वंस यू स्टॉप बस खत्म हो गया, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। आपने जो इनोवेशन की है उसको कंटिन्यूअसली कुछ और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ना। जैसे कि अगर
सबसे पहले जो दुनिया में गाड़ी बनी होती, अगर अभी तक वही गाड़ी चली होती, क्या वो सक्सेसफुल रहती? बहुत सारे चैलेंज आप थे, तो दैट मींस उस पर्टिकुलर जो सबसे पहले गाड़ी बनी है उसमें इनोवेशंस कंटीन्यूअसली होते आ रहे हैं। दैट इज व्हाई आजकल जो है हम फुल सेंसर, जिसमें फुली सेंसर गाड़ी होती है, सेंसर्स फुल होते हैं, सब कुछ होते हैं हमारे कंफर्टेबल, जैसे जो हम सोचेंगे उस हिसाब से वो गाड़ी। इट इज बिकॉज ऑफ कंटीन्यूअस इनोवेशंस इन दिस वे। तो इसी तरह से यहाँ पे कंटीन्यूअसली इनोवेशन इसमें नहीं रहती है। And 77% of venture capitalists surveyed believe that Indian startups lack new technologies and unique business model. यानी हम new technologies को easily adopt नहीं करते। हमारे पास जो business model होता है वो unique नहीं होता है। पर्टिकुलर अगर हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे, आप अपने पूरे घर में देखोगे जहाँ पे भी आप रहते हो, एक चासन त्रोमुत क्या दुकान, एक चासन त्रोमुत रेडीमेड गवर्नमेंट दुकान, बाकी विषय एंट्रो रेडीमेड गारमेंट दुकान, सर इस्ट्रो रेडीमेड गारमेंट दुकान, शर्मा कितना एक्स्ट्रा हार्डवेयर दुकान, सर इस्ट्रो हार्डवेयर, ये तुम सोच एमी जोन ऐसे वो विजन एक्चुअल मजेन अगर कुछ मज नफा छु दैट इज रेडीमेड गारमेंट, ये एक्चुअल हार्डवेयर है। तो इस लगा तुम सी बात। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ना सो विचार करना बिजनेस ना इस करना बिजनेस है कि नहीं। तो ये कंसेप्ट कैसा आसुन कि हमें एक यूनिक बिजनेस मॉडल होना चाहिए। अगर उसने अलग एक बिजनेस सेटअप किया है, हमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि उससे यूनिक होना चाहिए, सो दैट हम उसको मार्केटेबल बिल्डिंग कर सकते हैं, उसको मार्केट तक पहुंचा सकते हैं आराम से। इसी तरह से यहाँ पे और भी एक प्रॉब्लम है। इसी सर्वे ने कहा कि इनको प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि सफर से पहले, जब कहीं पे जर्नी पे जाना चाहिए ना, सफर से पहले अपना जो है हम सफर चुनना चाहिए। ठीक है, ये एक फेमस जो है प्रोवर्ब है कि सफर से पहले हम सफर चुनो, और वो भी ठीक हम सफर। दैट मींस सफर से पहले प्लानिंग करो। हम सफर चुनना का मतलब क्या है, प्लानिंग करो। अगर आपकी प्लानिंग गलत है तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। अगर प्लानिंग ठीक है तो यू विल बी सक्सेसफुल। थर्ड थिंग इज कि हम इस जो भी इनोवेटिव आइडिया है हम उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है, हम सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेते हैं। हम यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करते हैं। जो भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड बंदे हैं हम उनको हायर नहीं करते, सो दैट हमारा जो आइडिया है हम उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करें। वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। एंड लेक ऑफ इनोवेशन, ये तो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद फंडिंग की भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फंडिंग को हम आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद है लैक ऑफ मेंटरशिप, यानी हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम उसमें किसी और की गाइडेंस नहीं लेते हैं, हम किसी और को कंसल्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं हम जानने वाले ठीक है, जो ऑलरेडी इसमें बिजनेस में होंगे हम उनसे कंसल्टेशन नहीं लेते। आप देखते हो शार्क टैंक में देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसा वहां पे आते हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा है, बट वो किस चीज के लिए आते हैं, ओनली फॉर मेंटरशिप, ओनली फॉर गाइडेंस, है ना। वो बाद में कहते हैं अनूप को या किसी दूसरे को कि मुझे अनूप चाहिए अपने इस बिजनेस में, मुझे वो दूसरा जो है बहुत सारे बंदे हैं वो चाहिए इस बिजनेस में। रीजन ये है कि वो उनकी मेंटरशिप चाहते हैं क्योंकि दे आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। या हमने ओला केव्स देखा, अदरवाइज ये छोटा सा आइडिया है, लेकिन ये आइडिया अगर आप राइटली इसको एक्सिक्यूट करोगे, राइटली प्लान करोगे तो इस आइडिया को एक बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई बेटा Thank you very much for this wonderful presentation, and I hope कि सभी स्टूडेंट्स भी ये mind-boggling numbers देखे होंगे। They are in 1 crore, 1 lakh crore, 2 lakh crore, and सभी जो ये projects हैं they are based on very simple ideas। तो एक क्वेश्चन इसमें हमारा अभी आई थी एक क्वेरी यहाँ पे कि अगर किसी बच्चे के पास कोई प्रोजेक्ट ऐसा है तो वो कहाँ जाए। They will definitely consult IIC members, हमारे यहाँ पे टीम है, हमारे साथ आप राब्ता कायम करेंगे। जो भी उसमें डायरेक्शंस हैं, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए उसमें, we will try to give you all the support whatever is possible, ताकि आपकी जो भी छोटी मोटी इनोवेशन है उसको हम सही प्लेटफॉर्म पे लेके आए। Now I am happy that we are also having with us one student entrepreneur, मिस इकरा, जो कि कैलीग्राफी की एक्सपर्ट हैं। वो हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करेंगी और अपना जो प्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड करेंगी।
One second. Before we also in our program, we will be also sharing this performer with you. ये small performer है जो सभी students fill करेंगे. It is sort of a questionnaire जिसपे 5 questions हमने पूछे हैं. Very simple yes or no type. So I am distributing it along. Once your presentation is over, you will fill this performer. Okay? Please continue. Respected teachers and my dear friends, Assalamu alaikum and very good afternoon to all of you. Well, I am from Mushtaq, student of 4th sem from the Department of Arts. Today I am here to promote art. I just want to thank Mr. Wasim sir and Javed sir for giving me this golden opportunity to come here to promote my art. First of all, I would like to tell you my journey, how my journey has been started as a calligrapher. COVID as a trigger for starting my calligraphy. You know what, in 2020, when everyone was in their home focused because of the pandemic, I started to do calligraphy. मैंने calligraphy start की and I was not sure कि इतना अच्छा मैं इसमें कर सकती थी. तो मैंने start किया कोविड में. मुझे मतलब it was my hobby. मेरी चाहत भी थी कि मैं इसमें कुछ करूं. तो मैंने start किया. जो कोविड है वो मेरा मतलब एक जरिया बन गया calligraphy का. उसमें सब लोग गायब होते थे. And then I started to do calligraphy on social networking site. मैंने एक पेज खोला इंस्टा पे और within 1 month मुझे orders आने start हो गए and that feeling was just awesome. जब मेरा it was my first order on Instagram. पहले बस था. Can we zoom in? Because you go in the view section and then try to zoom in. Hello. Full screen. Yes, go to the full screen. Yes, full screen. वहाँ ऊपर है top left पे. Hello. Okay, good. हाँ. It was my first order. When I got this, शायद ये श्रीनगर से था. मुझे याद नहीं है. So it was my first order and then second order ये मतलब ये गौरतलब से था. Or then another order. Today I am delivering my products all over the Kashmir. Social media as a learning passport. मतलब जो होता है ना मतलब इंसान को मेहनत भी करनी होती है मगर कुछ सीखना भी होता है. वो मैंने कहाँ से सीखा? YouTube से. मतलब हम ऐसी मतलब जनरेशन में रहते हैं जहाँ पे कुछ सीखना उतना मुश्किल भी नहीं है. हम YouTube से कुछ भी सीख सकते हैं. हमें सिर्फ क्या करना है, सर्च करना है और हमें वहाँ से निकलता है. मगर हमें कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए. हमारा मतलब ये नहीं होना चाहिए मैं ये कुछ छोटा काम है मैं नहीं करूँगा, ये कुछ ये है मैं नहीं करूँगा. मगर हमारी क्या होनी चाहिए? हमारी चाहत होनी चाहिए इसमें क्या मैं करूँगी या मैं करना चाहती हूँ. तो मैंने क्या किया, मैंने YouTube से सीखा और ये इतना ही नहीं. जब 2019 में मेरा 12th खत्म हुआ, मेरे मार्क्स कार्ड में क्लैश आया था. कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ गलत हुआ था. तो मैंने टेलरिंग भी स्टार्ट की एंड आई हैव माय ओन बुटीक इन माय ओन विलेज. मैं क्या सोच रही हूँ 12th के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई जो है वो इग्नोर रखूँ. मैं अपने बिजनेस पे ही ध्यान दूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर्स बहुत आते हैं. और इन दिस ईयर आई हैव गॉट 100+ ऑर्डर्स. इट वाज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन. बस इतना ही कहूँगी. अगर आपको कुछ स्किल है हमें क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए टू वांट फुलफिल इट. ये नहीं होना चाहिए कि ये छोटा काम है मैं क्या करूँगी. पढ़ाई भी साथ है, पढ़ाई भी सही है मगर ये हमारे आपको ये सोचना चाहिए कि आप गवर्नमेंट जॉब मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है. इसमें कॉम्पिटिशन कितना है. हमें कुछ करना होगा. मतलब हमारी फैमिली मेरी फैमिली लोग हमारी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी फीस के रिलेटेड. मतलब कभी पापा के पास फीस भी नहीं होता. और आज देखिए मैं अपने पैसों से कॉलेज आती हूँ. किराया जो
आती हूँ यहाँ पे, फीस भी मतलब हाफ पे मैं अपना करती हूँ, फिर पापा से लेती हूँ, पढ़ाई सब कुछ। It was so nice to hear from Miss Nikita. Please give her a big round of applause. She will be applying for UP challenge. You just हमारे पास आइए और अपना जो भी आपका resume है, along with this presentation, you will apply on the portal, and hopefully you will get the grant. She will hopefully get the grant of 10 lakh rupees, and you don't need to even pay it back. So wonderful. Now I request our volunteers to kindly distribute these performers among the students so that we can get responses from the students. कुछ आज एक दो वॉलंटियर कर दीजिए, स्टूडेंट्स में बीच में डिस्ट्रीब्यूट करिए, 1 student in each column. Settle down, girls. So before starting off with facts, numbers and figures, in order to make you understand or appreciate the value of entrepreneurship, I think enough has already been said. ठीक है? आप लोगों ने काफी डिटेल्स सुनी, फिगर्स सुने, फैक्ट्स सुने, ठीक है? डेफिनेशंस सुनी, ठीक है? स्टेप्स and all those things, ठीक है? Mostly during these sessions, आप लोग एक passive listener more or less रहे हैं. So I think let's change that for a while, ठीक है? Let's get some information or feedback from you people. What do you feel or think about entrepreneurship after all these sessions have been over? ठीक है? This is something that will also come in handy for filling up the forms that are with you. ठीक है? अभी मैं पीछे गई थी and one of the girls was very curious about the fact कि मैम इस पे क्या लिखना है? The thing was about innovation. ठीक है? अगर आपको you already have a session where you have been updated and informed about the basics of it. ठीक है? For a lay person, especially a person who is not well versed with this field, हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज जब हम इनोवेशन सुनते हैं comes साइंस में कुछ ही नहीं कुछ किया होगा, इन्वेंट किया होगा, ठीक है? कोई नया दवाई निकाली होगी, कोई नया गैजेट निकाला होगा, ठीक है? But innovation is not only confined to those things as such, ठीक है? There are a number of fields जहाँ पर there's plenty of scope for innovation, ठीक है? You can come up with many new ideas, many creative ideas, so to say, ठीक है? नए भी ना हो, there can be an amalgamation of 2 or 3 different types of things put in a new form, ठीक है? And I find it very surprising कि मुझे कहा गया that I have to talk about entrepreneurship. And surprising इसलिए क्योंकि मेरी लाइफ में even before I joined this institution, I have been fortunate enough to have my own students who have actually gone into this field. Knowingly and knowingly I was there for them, without having a concept of this enterprise as such. November की बात है, मेरी एक स्टूडेंट की गैलरी थी, ठीक है? महता स्टूडियो, पता है आपको, I guess, ठीक है? तो वहाँ पर पेंटिंग का एग्जीबिशन रखा था, मेरी स्टूडेंट का ही था वहाँ पर, ठीक है? And she is one of the leading painters of the valley. She often goes to different places across the country and has showcases of her work. ठीक है? So I went there and she introduced everyone to me because I was the only adult there. And all these people, all these painters were the youngest lot out there, ठीक है? And माशाल्लाह बहुत ज़्यादा beautiful paintings थी उनकी, ठीक है? इतने में एक अंकल आए मेरे पास, वो अपनी बेटी को लेके आए, and he was very curious about this thing. And उनका पहला सवाल था, as a teacher, he thought that I was the painter and I was somewhat leading them because they were giving me that VIP treatment. कि Mavish ma'am आई है and she's our painter's teacher. तो उनका पहला सवाल था कि मैम इसका कोई करियर है क्या? He had a very small girl with him. ठीक है? वो I guess 7th 8th में थी and she was looking at those paintings with stars in her eyes. उन्होंने मुझे seriously बोला, मैम इसका कोई करियर है? If she wants to go there, is there a career option there? So I, with my limited knowledge of whatever I had,
एंड थैंकफुली आई हैड सम नॉलेज बिकॉज कॉलेज में ही हमारे कुछ ऐसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए थे जिसमें काफ़ी हैंडसम अमाउंट रखा गया था। सो विद दैट नॉलेज इन माइंड आई डिड टॉक टू हिम, आई डिड कन्विंस हिम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट। By the end of the talk, he was really willing to make his daughter an apprentice of that place. ठीक है, इतना हमारे को हो गई थी, I would like to see into it. Ma'am, is it possible कि अगर मैं इसको बाहर भेजूं, दिल्ली वेली भेजूं, can she make a name out of it? जैसे मेरी बेटी बहुत talented है, इसका यहाँ talent waste तो नहीं हो जाएगा। मैंने कहा नहीं। I even suggested some, some governmental agencies and some non-NGOs who kind of did support these kind of arts. ठीक है, उसके अलावा I have another student of mine जिसका unfortunately because of some clash in her family, her mother is not willing to let her study because she is more preoccupied with making the boy child learn and stuff, and she's not willing to spend money on this girl of hers. But fortunately for her, ये जो लड़की है ये इसको क्राफ्ट बहुत ही बढ़िया है। She makes things out of woolen goods. ठीक है, कितने यूनिक डिजाइन्स है उसके पास। You won't even imagine the creativity that she has. And thankfully, she has actually taken inspiration from Shams ma'am's sister, जिनका एक account है where she actually uses her creativity and has created a platform for other people to look and get inspiration from that. तो मैंने उनको यहीं से सजेस्ट किया, why don't you take a leaf out of my mom's sister and go for some sort of training in that field. And thankfully now she's actually making something out of it and trying to earn for her own studies right now. Because not everyone is fortunate enough to have parents who are really willing to spend money on the education of their children. आजकल वैसे भी parents हैं, it's like okay 10th 12th enough, we don't want to spend more money. ठीक है, ऐसे situations में there are many people who are actually taking a step forward. The same girl जिसकी मैंने बात की थी आपको, जिसकी पेंटिंग के लिए मैं गई थी, बदरुनिसा, ठीक है, she is known for her Sufi paintings, ठीक है, mostly she makes Sufi painting, and उसके पास भी बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आया था, एक बहुत अच्छी रेस्टोरेंट में एक पूरी ग्लास वॉल दे दी थी उसको to do whatever she wanted to do, and by the end of the time she got a pretty handsome amount for it. She had made a pirate theme there on that glass wall and it was completely mesmerizing to say the least. ठीक है, वो अभी भी पढ़ ही रही है, मगर पढ़ते पढ़ते she is earning too. She didn't leave her studies. It was not like मुझे पैसे मिल रहे हैं तो let's let go of the studies. PhD कर रही है. She's doing her PhD and simultaneously she's also working towards the other side businesses. इतना ही नहीं, इसके अलावा उनकी ममा के साथ who is a house worker, who is a house maker rather, उन्होंने एक बेकरी भी खोल दी है जिसका वो Insta पे they have opened the page and have marketed their products. ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट्स हो या फिर उनकी ममा is a very good a very good cook, so to say. ठीक है, so they have taken this brand and they are trying to make a name out of it. ठीक है, and they have been amazing at this thing. और उसको देख के बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं who completely have followed her in that very zone. ठीक है, मेरी और एक स्टूडेंट है वो मंडला आर्ट बहुत ब्यूटीफुल बनाती है and what she has done, she has added an Islamic touch to it. मंडला आर्ट के अंदर कैलीग्राफी करके रखी है in a very beautiful manner. ठीक है, उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका नीडल वर्क पे बहुत ज़्यादा they are very good at it. ठीक है, मुझे पर्सनली मेरी स्टूडेंट ने गिफ्ट दिया था. It was about 2nd or 3rd anniversary of our friendship, so to say. She considers me to be her sister. And उसने मुझे एक beautiful art piece दिया है जिसमें उसने इंसान बनाए हैं through those stitched up woolen work, और वो बहुत ज़्यादा beautiful है. Something that is comes handy in weddings. ठीक है, एक wedding mood पे ही उसने वो बनाया है. And she is actually at
suggested to her to open a page because I think that she has a lot of potential, and if she does find the right guidance, she can go a long way. ठीक है? Usually लोग जब mentoring की बात करते हैं, it's like ठीक है, मुझे आता है, I'll place it on X, Y, Z, and it will be over. That's not enough. Especially अगर आप you're talking about some innovation in a different field. For example, you have made something that, you know, a gadget or something. You can sell it, but you do need a person who has a know-how of that job, okay? Who can get you in contact with other people from the same job, okay? Who can make you aware of the diversity of the field and can open up new contacts and new avenues for you. जिसके लिए हमें mentors की ज़रूरत होती है, ठीक है? Mentors have that purpose. They not only guide us, but they also open up our eyes to the wider options that we have. ठीक है? उसके अलावा भी you have a lot of examples of entrepreneurship. ये तो मेरी पर्सनल लाइफ में जिनको मैंने देखा था उनकी बात है. 3 Idiots कितनों ने देखी है? 3 Idiots कितनों ने देखी है मूवी? सबने देखी है? You have 3 innovations there if you remember. जब by the end of the movie, your Ranchod Das, you know, he's living in Ladakh or an offshoot of it. There are 3 inventions which have been actually made by people, ठीक है? For different purpose, ठीक है? And they were used in that movie, ठीक है? One of them was a machine where a person is actually, you know, pedaling a bicycle, and by that energy they are shaving off the, you know, the wool of the sheep. Okay? Then there's another equipment where they're using another vehicle, a scooter, to get the husk. Okay? These innovations were actually taken from real individuals. They were not supposed to make these things for selling them online. ठीक है? उनमें से एक ऐसा बंदा था, एक ऐसी बंदी थी rather, जिसकी mother was on the verge of death and her father was not, you know, he was not available most of the time. And in order to help her mother, she had made that cycle. ठीक है? ताकि it would save time. Most of the time, we know these innovations by the name of जुगाड़, so to say, ठीक है? जहाँ पर आप लोग shortcuts ढूंढते हैं to make your life easy. Many a times when people get a proper platform and under the rightful guidance of your mentors, you do shape the raw edges of these projects and actually can present people with a solid item, so to say, ठीक है? When it comes to Budgam, आप में से there is this vocation spot, उसका नाम क्या है जो यहाँ पर है? गए हो वहाँ? A few days or rather a few years back, there was a news article on the entrepreneurship of the women of that area, especially the ones who are selling those rotis and chais over there. And they have made it possible for the next generation to study by selling or by getting their goods sold at these places. Usually the log the men folk were the ones in charge of the finances of that place. Okay? But then the women folk came and wanted to share the burden of their men. Okay? Usually क्या होता था कि पैकेट फूड दिया करते थे, लेस वेस होते थे, वो बिका करते थे वहाँ पर. But they realized that by the end of this event, a lot of waste was there. Okay? So they came up with this idea that we will make these things on spot and sell them at this very place. An initiative that was appreciated by the government of the day. Okay? And they were happy at the fact that they had added to the income of your families. Okay? It was a positive step in that direction. हमारी जॉब जो हम यूजुअली जिनको जॉब्स मानते हैं in this day and age are usually the government jobs. That you are nothing if you are not in a government job. आपको अगर कोई सर नहीं बोल रहा, अगर आपको कोई मैम नहीं बोल रहा, you are lower.
those days are gone. Okay? There have been instances where people who have not been from educational background or have rather had a low education, through the use of their own intellect, through the use of their innovations, they have earned much more than the average sir or madam in a government setting would ever be able to do. ठीक है? कोविड की जब बात करते हैं, कोविड ने बहुत सारे एवेन्यूज खोल दिए हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे जॉब्स एग्जिस्टेंस में आए जिनके बारे में पहले इंसान सोच भी नहीं रहा था। ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम, which was उससे पहले was almost like ठीक है, देख लेते हैं, someone is just trying something out. It became a mandatory part of our lives. ठीक है? You have a number of Kashmir-based delivery systems that came into existence, जहाँ पर उन लोगों ने अपने लिए एक नाम बना दिया, ठीक है? You even have a lady in Budgam who won a state award for needlework. State award for needlework. Because she not only sold the goods that she made by her hand, but she also gave other women this opportunity by mentoring them, by guiding them, and making them see that there was another prospect they could earn by other means too. ठीक है? आज के डेट में I have even my students from this very college who send me pictures of pashmina shawls that they have actually made at home. ठीक है? A lot of you have actually sent me those pictures, and they usually talk about the fact that ma'am, we put in a lot of hard work, but we don't get the proper market. Okay? And here is where your government schemes come into play. Okay? Awareness के लिए IIC does give you these avenues of interacting with a number of intellectuals from different, fields. An opportunity will be given to you to exhibit your creativity, to exhibit your products, your artifacts. If possible, I think, sir, in a few months' time, an exhibition might take place. And if any one of you has actually done something, it need not be a big thing. Chota hi sahi, I would suggest that you do offer your name to our teachers, the team in concern, and give it a go. ठीक है? मुझे याद है back when I was a kid, not a kid, back when I was in school, I had this collection that I had made. I was a clay artist, I guess, and I used to make bread art crafts, ठीक है? And I had made an entire zoo out of it. And my teacher completely was adamant about the fact that I should sell it. But I didn't sell it because I was too naive to even consider money as an option. ठीक है? मेरा अपना दिमाग किसी और डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है? उसके अलावा I do have certain things that I keep on dwelling in things from different places. I also do craft, I also paint, I also do woodwork, I do a number of things, ठीक है? So it's something that you should not berate, you should not belittle if you have something which you think, it can even be a craft as low as doing these mehndi designs. We have a very beautiful mehndi artist amidst us who keeps on doing these mehndi designs. मुझे याद है हमारे कॉलेज में and even in our schools we actually had stalls. जहाँ पर हमारी ही लड़कियाँ, हम ही लोग would sit in stalls and charge money for making those mehndi designs, and it did generate a lot of revenue for that day and for our committees back then. ठीक है? So if any one of you is interested, please get in touch with our teachers, and I think that I would like to conclude it at this lighter note only. ठीक है? So please submit your filled up sheets. Sit down, please. Silence. Be quiet, Sir Ma'am. Thank you so much for your presentation. It was important announcement जो मैं
जी ने अभी करी कि जिसको भी कुछ प्रोजेक्ट है वो हमारे पास सबमिट करे बिकॉज वी माइट बी हैविंग दैट प्रेजेंटेशन एग्जीबिशन गोइंग ऑन इन द नेक्स्ट मंथ so don't worry about the scale of the project only just you have to enroll with us we will take care of the rest of the things अभी सब परफॉर्म कीजिए कंप्लीट एंड vote of thanks can submit 2 मिनट वेट कीजिए, बस 1 मिनट वेट ये सब President, Bilal Soman, Vice President, Iqbal Soman, President Coordinator, Haya Soman, presentation related. इंसान के ऐसा कि कुछ ऐसा कि बिटवार के काफ मगर टाइम माइट विजन मैच में शुक्रिया करन तम खुद सारी खुद ज्यादा ये मस्जिद मुश्किल में तो उसने बात कि शायद स्कोर्स ऐसे मुझे पता ये स्पेंडिंग की गॉड ने कुछ में ये स्पेंडिंग ये मास मुझे पता बड़े जाए मगर लोग स्टूडेंट ने यूथ एक्सपेक्टेड कि खास करके ये कॉलेज में उसने बिल्कुल बात की ये कैसे इनका आउटपुट एम कॉलेज को अक्सर स्टूडेंट्स करान शुक्रिया कि तो हम शुक्रिया करान कि ये वो आज कॉपरेशन कर जायज हो हैजा हो वसीम साहब भैया हो तो हम कि तो भी जो ये मन दोन गाना वो जो तो ये सोरे बिल्कुल कि मैं बात साहब के शायद आ कास में अष्टमी अनपढ़ तिजाइज मैं तो बात है कि साइंस बाय लाइक डोर पास में यम प्लेट फार्म यम चीज as मैं के उस कोई मुमकिन छु मैं का असली कट बने आप कट बने सी बस अगर कोई मस यू आर गेट सॉरी कारण ट्रांसलेशन जॉब्स इन इंडिया अगर कोई मस सिर्फ आप साइड खुलती बात करो तो क्यों कौन ऐसे करते जॉब यानी मैं कर एक दो वाली कोशिश इन सब पे कौन साइड का ऐसे कर सकती ऑनलाइन कर सकती टूल ट्रांसलेशन की मानता यानी कौन की चीज हो सकता है पैसे की मोटे 7 वर्ड पैसे मोटे 500 रुपए अगर कोई ऐसे ऑनलाइन जॉब करी यानी यू शुड बाय अगर तो इंडियन जॉब्स में गए तो ट्रांसलेशन जॉब प्राइवेट ट्रांसलेशन जॉब्स तो जो तक भी आप मगर तक बस इसी पोटेंशियल आसुन कि तो है कि सुकरी मैं सिर्फ आप लड़की इन आप बुक कर सकत एनबीटी ऑफ इंडिया इन नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया कर सब पब्लिश सच एज नंबर सब बच्चे सब में से 3 वर्कशॉप्स तेम बुक चंगन इंडिया में ट्रस्ट इंडिया अवेलेबल मैं बस समाज शायद अमेज़न पे आमस दुबई में गए पब्लिश गो सुच सारे कॉलेज का ना मैं शायद मैं शायद गाँव पे शुरू किया था मैं सुशेष गाँव रोज़न गो तेम सुन कि मुझे यह लेवल मस्ती कर सुन टच में चाइल्ड लिटरेचर में कर दिन आप बुक ट्रांसलेट तो तक कुछ इम्पोर्ट इंशाल्लाह ये सब मेरे इस प्रोग्राम है ये सब दिन आकर पाँच फुल प्रेजेंटेशन